Our focus to West Bengal again, where ahead of the final phase of elections 2024, a face-off has erupted between the BJP and TMC, and this continues to escalate over the period of time. Now, West Bengal CM has now hit out at PM Modi, saying that if PM is God, then why did he instigate riots? So these are the latest inputs that we are tracking at this point of time. Let's hear out on what Didi had to say. উনি তো সব দেবতার রাজা, তা আমি বলি হতেই পারে ভাই। কেউ বলেছে জগন্নাথ দেব ওনার ভক্ত ছিলেন, তাই বললাম খুব ভালো কথা। সবাই দেবদেবতারা যদি ওনার ভক্ত হয়, তাহলে যে দেবতা হয় তার তো রাজনীতি করার শোভা পায় না, তার তো অতিহিংসা ছড়ানো শোভা পায় না, দাঙ্গা করার শোভা পায় না। তার জন্য একটা মন্দির করে দিচ্ছি, আপনি বসুন, আপনাকে নকুলদানা দেবো, বাতাসা দেবো, তুলসী পাতা দেবো, বেল পাতা দেবো, ফুল দেবো, খেতে দেবো, ভোগ বানিয়ে দেবো, ধোকলা চাইলে তাও দেবো। We just heard Bengal CM Mamata Banerjee taking a dig at PM Modi, especially ahead of the final phase of elections in 2024. This face-off between the BJP and TMC continues to escalate time and again, and this time West Bengal CM Mamata Banerjee has now hit out at PM Modi, saying that if PM is God, then why did he instigate riots? Now, joining us on the broadcast is our colleague Kamalika. Very good morning, Kamalika. These are the latest inputs that we've been tracking. Yet another controversial statement coming in from Mamata Banerjee. Take us through all the details. See, this was while she was campaigning in South Kolkata in Behala. She referred to the statement of the president of BJP, Jagat Prashad Nadda, and she said that a lot of people are saying that he is a god. If he is a god, then why he is instigating into riot? And she also said then if he is a god, there should be a temple and everything should be, all the prasad should be given to him. So obviously this is again directly a hit to the Prime Minister by Mamata Banerjee. This is the last leg of election, and in the last leg of election we see that there is a aggressive war of words going between two parties. But now this is also where the Chief Minister directly attacking the Prime Minister on this ground. Right, Kamalika. This is yet another statement, especially after Rahul Gandhi. Mamata Banerjee has also turned to slam PM Modi for sent by God comment. But what is the actual sentiment on the ground when it comes to these kind of comments, especially pertinent to the West Bengal situation? And definitely there are mixed reactions in people with that, because obviously he is the honorable Prime Minister of the country. Right. So there obviously there is a huge reaction on this. It's not only the reaction is coming from BJP, but the reaction is here from the common people also, because the war of words has gone in this extent. Right. That hitting out to the Prime Minister is again a very big question that's been raised. Right, Kamalika, we are tracking these inputs at this point of time, where Mamata Banerjee, Bengal's Chief Minister, has yet again taken a dig at PM Modi, but this time for his sent by God comment. Now, joining us on the broadcast is Rahul Sinha, a BJP spokesperson. A very good morning, Mr. Sinha. Thank you so much for speaking to CNN News 18. Well, Mr. Sinha, after Rahul Gandhi, Mamata Banerjee also has now turned to slam PM Modi for sent by God comment. What are your party's stance and comments on these controversies and jibe that are coming in from the opposition leaders? देखिए, प्रैक्टिकली पूरा देश का जनता को सेवा करना, पूरा देश का जनता का जो भावना को आदर करना और गरीब लोगों को साथ देने का काम मोदी जी इस 10 साल में किया, जो पहले इतना गरीब लोगों का साथ देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। सबने मुंह में बड़ा बड़ा भाषण दिया, गरीबी हटाएंगे, लेकिन उल्टा गरीबी को लाया। तो इसीलिए मोदी जी गरीबी को हटा के देश को आज ऐसा एक स्थान पे लेके आया, जो भगवान का चेला जो है वही ऐसा कर सकते हैं। और इसलिए ममता जी तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ दुर्दिन लाया,
दंगा फसाद कराया पश्चिम बंगाल में, जो आज महिला का सम्मान पूरा नष्ट करके छोड़ा। तो इसीलिए सब तरह से पूरा देश में मोदी जी जैसा सुशासन लाया, इसको गॉड गिफ्टेड जो शासन छोड़ के और कुछ कह ही नहीं सकता हम लोग। सिन्हा जी, पर ऑपोजिशन का टाइम एंड अगेन ये सवाल है कि अगर पीएम मोदी को भगवान के रूप में देखा जा रहा है तो क्या भगवान राइट्स इंस्टिगेट करवा सकता है? ये क्वेश्चन बार बार ऑपोजिशन, नॉट सिर्फ कांग्रेस बट टीएमसी ने भी अब पूछ लिया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Okay, well, we seem to have lost the connection with Mr. Sinha. That was the BJP's spokesperson who came and shed light on this entire controversy, where Bengal CM has now hit out at PM Modi over his sent by God comment. Now, let's take a look at some of the reactions and bites that we are getting on this situation. সত্যি আমার ইনফরমেশন নেই। বলেছেন উনি তো সব দেবতার রাজা। তা আমি বলি হতেই পারে ভাই। কেউ বলেছে জগন্নাথ দেব ওনার ভক্ত ছিলেন, তাই বললাম খুব ভালো কথা। সবাই দেবদেবতারা যদি ওনার ভক্ত হয়, তাহলে যে দেবতা হয় তার তো রাজনীতি করার শোভা পায় না, তার তো অতিহিংসা ছড়ানোর শোভা পায় না, দাঙ্গা করার শোভা পায় না। তার জন্য একটা মন্দির করে দিচ্ছি, আপনি বসুন, আপনাকে নকুলদানা দেবো, বাতাসা দেবো, তুলসী পাতা দেবো, বেল পাতা দেবো, ফুল দেবো, খেতে দেবো, ভোগ বানিয়ে দেবো, ধোকলা চাইলে তাও দেবো।